तो फाइनली तुम ये कमरा खाली कर दोगी? कितनी दफा बताओगी? और ये घर भी खाली कर जाओगी? कहीं तुमने जो दिल की बात, क्या बात है ये जो तूने दी मुझे सौगात, क्या बात है, क्या बात है। सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। खुशियाँ बिखेरे हैं, रहमतों के साए हैं, वतन की मिट्टी के मेरे हर रंग निराले हैं। हर जात का पासबां इसके रखवाले हैं। मेरे देश के कोने कोने में रहते जयाले हैं। शोखियाँ हैं, मस्तियाँ हया की सारी बस्तियाँ। शोखियाँ हैं, मस्तियाँ हया की सारी बस्तियाँ। गलियाँ गलियाँ, कूचा कूचा, ठंडी ठंडी वादियाँ। मेरी पहचान पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मेरी आन पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मेरी आन पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान। बर्फ से ढके पहाड़ हैं, मीठे फलों के बागात हैं। शफाफ पानी के बहते झरने रास्तों के साथ हैं। चहक चहाते उड़ते परिंदे, रंग बिरंगी तितलियां। गीत गाते पेड़ पौधे, क्या सुहानी बात है। कोह के वादियों में आंखों में पड़ते बादल। मेरी पहचान पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मेरी आन पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मेरी आन पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान। खुले खिले मैदान है, तारीख के मकामात हैं। झिलमिलाती धूप है, बारिशों का जोर है। दरिया सारे मिलते हैं, जहाँ समंदर गिरते हैं। रेगिस्तान की रेत के चमकते क्या सितारे हैं। सरसब्ज़ शादाब है देश का कोना कोना। मेरी पहचान पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मेरी आन पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मेरी आन
मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट मदहोश। आज करेंगे बातें आराम से। ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡਿੰਗਲਿੰਗ 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 ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡਿੰਗਲਿੰਗ ਡਿੰਗਲਿੰਗ We are PIA, Pakistan International Airlines, the national flag carrier and the most prominent Pakistani entity in the international skies. With our head offices in Karachi, we operate from two major hubs, Karachi in the south and Islamabad in the north. Flying passengers across the globe is our fleet of 32 state-of-the-art aircraft, with the Boeing 777 family serving as our workhorse, supported by A320s and ATR. We are the first non-communist airline to fly into China, opening it to the world, creating truly global east-to-west connectivity since 1960s. First to connect Asia to Europe and Moscow. Upholding a tradition of introducing successful aircraft to the world, our 777 holds a world record of the longest non-stop flight. We are an expanding network of 27 international and 21 domestic routes, and the only airline to operate to the most beautiful northern areas of Pakistan. We are a synonym of Pakistani hospitality, known for our most delicious meals, prepared in our own kitchens, exhibiting high levels of professionalism. Our highly trained pilots and crew are recognized the world over. Those smooth landings don't come just from instincts. We have one of the most competent and professional engineers who service not only PIA, but all major airlines. The Isfahani hangar, when first constructed, was among the largest in the world and serves as home for all PIA fleet for maintenance. PIA is Pakistan's most iconic brand. The nation's love and emotional attachment for PIA is unprecedented. PIA's journey to success continues with ever-improving customer care. Increasing global spread, providing connectivity from all parts of Pakistan to the world, reducing distances, spreading love, celebrating the seasons and colors of Pakistan. We are Pakistan International Airlines. We are great people to fly with. शहर बसते हैं वहाँ के वासियों से और उनके दिलों में कायम मोहब्बतों से। डीएचए मुल्तान में भी हमने आपके लिए मोहब्बतों, कामयाबियों और खुशियों भरी कहानियां इकट्ठी की हैं। लाहौर से आने के बाद मैंने और सना ने डीएचए मुल्तान को ही चुना। मुल्तान में रिहाइश के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, लेकिन डीएचए मुल्तान देखने के बाद सोच लिया अगर रहना है तो डीएचए मुल्तान में ही रहना है। डीएचए मुल्तान में घर बनाने का मशवरा एक दोस्त ने दिया और रियली क्या अच्छा मशवरा था कि घर बनाने का मजा आया ना। आला लोकेशन, बेहतरीन माहौल, खूबसूरती और चारों तरफ हरियाली। यकीन माने कि दिल खुश हो जाता है। अंदरून शहर में तो गली में गाड़ी ले जाना भी मुश्किल और यहाँ डीएचए मुल्तान में वड्डी वड्डी सड़कें, हर तरह की सहूलत, बेहतरीन स्कूल्स और फिर मोहल्लेदारी। क्या बात है। हम डीएचए मुल्तान में क्या रहे, यहीं के हो गए। बच्चे जब दिल चाहे जू में सैर के लिए निकल जाते हैं।
और हर सहूलत घर से चंद कदम के फासले पर है। मस्जिद और पार्क में नए दोस्त बने और फिर ये दोस्ती पक्की होती चली। मैं तो गोल्फ खेलता ही था, सोचा कि दोस्तों को भी रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी ले जाया जाए। ओ बिलाल यार, ओए साडे बस दी गल नहीं। ले रोमांजा एक मुकम्मल गोल्फ कम्युनिटी है। बेहतरीन रेस्टोरेंट्स और यहाँ की क्लब हाउस फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं। रोमांजा में गोल्फ एक अलग ही एक्सपीरियंस है और फिर नाइट गोल्फिंग इज अमेजिंग। बिलाल, मैंने सोच लिया, बड़ा कार अब मैं रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी में ही बनाऊंगा। खवातीन की अवली तरजीह सिक्योरिटी है और हम डीएचए मुल्तान में अपनी जिंदगी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुजार रहे हैं। मुझे तो डेली वॉक के लिए अपनी पार्टनर भी मिल गई है। क्यों मिसेस ख्वाजा? शुक्र है बच्चे घर से तो निकलते हैं। खेल ही खेल में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। वैसे बिलाल, डीएचए मुल्तान की रौनकें ही अलग है। रोड पे निकलो तो हर ड्राइव एक लॉन्ग ड्राइव लगती है। बड़ी अच्छी प्लानिंग है। जहां घर वहीं कारोबार। सेंट्रल स्क्वायर में अपनी बिल्डिंग शुरू की है। डीएचए मुल्तान तरक्की करेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। बताओ जी, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहां आमों के बाग हो? वाह जी वाह, दरख्तों की छांव में बैठ जाएं तो नेचर के और करीब हो जाते हैं। और फिर ग्रीनरी और प्लांटेशन देखिए, इससे तो मौसम भी बदल जाता है। और दिलों के मौसम भी। वैसे डीएचए मुल्तान में टेम्परेचर 3-4 डिग्री कम ही होता है। इनकी बातें और इन जैसे सैकड़ों खानदान डीएचए मुल्तान में जिंदगी को हर रंग में जी रहे हैं। इतना हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक गैस सर्विसेज के बावजूद डीएचए मुल्तान में प्लॉट्स की कीमतें इंतहाई मुनासिब हैं। सेक्टर वी, आई और B1 की डेवलपमेंट अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है और अनकरीब प्लॉट्स का कब्जा दे दिया जाएगा। नए घरों की तामीर के लिए ये एक सुनहरा मौका है। डीएचए मुल्तान में 5, 8, 10 मरला और एक कनाल के हजारों घरों की तामीर भी तेजी से जारी है। डीएचए मुल्तान के सेक्टर्स में इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन, वर्ल्ड क्लास थीम पार्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वर्ल्ड क्लास मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेहतरीन सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम, फास्ट और नमल यूनिवर्सिटी के अलावा मुल्क के बेहतरीन स्कूल्स और रिहायशियों के लिए बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं, जो डीएचए मुल्तान को पाकिस्तान की सबसे मुनफरिद और इको फ्रेंडली हाउसिंग कम्युनिटी बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि डीएचए मुल्तान हर तरफ से शहर से जुड़ गया है? बोसन रोड एक्सेस, सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर, मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड और नॉर्दर्न बाईपास एक्सेस, मत्तीतल रोड गेट से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और दीगर पब्लिक ऑफिसेज तक आसान रसाई। शाह रुकने आलम गेट और फातिमा जिन्ना बुलेवार्ड की तकमील एक बड़ा संगे मील है, जिसके बाद नेशनल हाईवे और मोटरवे से डीएचए मुल्तान का फासला चंद मिनट का है। वैसे भाइयों, खाने का जिक्र तो रह ही गया डीएचए अरीना में। ख्वाजा साहब, आज फिर खाना तुसा खवाओगे हैं? अच्छा फिर आज रहन ही दो। डीएचए मुल्तान, पैराडाइज ऑफ साउथ पंजाब।
ओह यस, ताजा मछली, उस पे ये मिर्च मसाला। अरे गिल्लू, मिर्चों से मसूड़ों में जलन है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। कोलगेट हर्बल, लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीना वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए। मसूड़ों में जलन अब नहीं। कोलगेट हर्बल अपनाओ, जो चाहो वो खाओ। मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। करेला जुड़वा है पर अलग है, दादाजान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज। पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखी कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ मुबारक हो, 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 मुबारक हो। तमाम यूफोन कस्टमर्स को मुबारक हो, क्योंकि सिर्फ यूफोन सुपर इनामी ऑफर से हर 100 रुपए के रिचार्ज पर यूफोन कस्टमर्स रोजाना हासिल कर रहे हैं करोड़ों रुपए मालियत के यकीनी इनामात। इसके साथ साथ बजरिया कुरानदाजी जीतेंगे शानदार 1300 सीसी गाड़ियाँ, बेशुमार मोटरसाइकिल्स और सोने के झुमके। ये ऑफर मौजूदा नए और यूफोन नेटवर्क पर मुंतकिल होने वाले तमाम कस्टमर्स के लिए है। मुबारक हो। पर मेरे पास तो यूफोन नहीं है। नहीं, आपका बेटा हुआ है। तालियां क्यों बजा रहे हो? मैं तो लाइट ठीक करने आया था। बाले लाइट मुंह पे मार। रात को ज्यादा खा लिया। आए। आपके मोबाइल फोन में बैलेंस खत्म हो चुका है। जरूरत के वक्त बैलेंस खत्म। कोई बात नहीं, अब तक तो जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी आपके यूफोन से मिस कॉल जा चुकी होगी। आपका दोस्त फौरन मिस कॉल देखकर आपको कॉल बैक करेगा। आप उसे अपनी मुश्किल बताएंगे और वो जरूरत के वक्त आपके काम आएगा। अरे यार, अब क्या मसला है? लेकिन मेरे पास तो यूफोन ही नहीं है। बराबर वाली आंटी ने कुत्ते के काटने की खुशी में ये भिजवाए। मिठाई? नहीं, 14 टीके, सारे खट्टे ना लगा लें। उठा लेना फोन आसिम। कासिम भाई कितने अरसे के बाद अमेरिका से कॉल कर रहे हैं। बेटा जिद न कर, आखिर तेरा भाई है। मैं उठा लेता हूँ। खबरदार, मेरे होते इस घर में कासिम का फोन कोई नहीं उठाएगा, बल्कि अपने यू फोन से कॉल बैक करेंगे, क्योंकि वहाँ से कॉल महंगी जो पड़ती है, समझा कर। इसीलिए अब यूफोन से यूएसए, यूके और कनाडा कॉल्स करें पाकिस्तान की तारीख के सस्ते तरीन रेट, यानी सिर्फ 1 पैसा फी सेकंड पर। ऑफर के लिए अभी *2288# मिलाएं। ऐसी ऑफर कोई और दे ही नहीं सकता। कासिम भाई, वहाँ इतना पैसा कमाकर क्या करेंगे? कॉल तो यहाँ सिर्फ 1 पैसे की है। मेरा सलाम कहना। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ। कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। कैसी शरीक हयात चाहते हैं आप? बोलो अमीर। लड़की गोरी हो, लंबी हो, खूबसूरत हो, शादी के बाद माँ बाप की खिदमत करे। अपने नहीं, मेरे माँ बाप की खिदमत। बहू पानी लाइए अब्बा।
जब मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊं तो जल्दी आके मेरे साथ बोर ही होंगे, लेट ही आइएगा। और जहेज जहेज एक लानत है। ऐसी आइडियल बीवी तो नामुमकिन है। आप ऐसा करें, यूफोन की नई सिम घर ले आएं। खूबसूरत आवाज, खानदानी नेटवर्क, फौरी राब्ता और 600 रुपए का बैलेंस भी ला रही। Viewers, you are watching Hot Talk, and today our guest is Professor Dr. Shahid Monir, Chairman Punjab Higher Education Commission. Welcome to the show, Dr. Saab. Thank you very much. Are you ready for Hot Talk? Of course I am ready. When you joined as a Chairman Higher Education Commission 16 June 2020, so what were the challenges for you? Some of the challenges are, number one is the capacity building of the commission, and second challenge was to improve the standard of higher education, and then to bring a change in the higher education system to transform the theoretical research into applied research, to bring a paradigm shift in higher education. This was a challenge for me because most of the universities are engaged in a theoretical research that is not being carried out on the problems of the Pakistani industry and the business organizations. So it was very imperative to bridge this gap and to bring the industry and university together on the same pages and to conduct the research on the issues of the Pakistani industry and business. For that very purpose, I started to work, and I gathered all the vice chancellors of the universities of the Punjab in Murree for 3 days conference, a paradigm shift in higher education, a hackathon. So we deliberated on this issue that in future how the society is going to be transformed, how the world economy is going to be transformed in the light of the World Economic Forum reports, and all the reports were agreed that in the future the artificial intelligence, the industrial robotics, the data sciences, and then the biotechnology are the major areas in which the research will be focused. And the European universities and the American universities are already conducting research. They are developing the super intelligent robots. They are dealing with the issues of water scarcity, the climate change, and at the end of the conference, we established the 7 consortia, and they are working on the different issues of the climate change, women empowerment, water scarcity, energy, and many areas, the robotics, etc. The purpose is to formulate the policy recommendations that will be transmitted to the Chief Minister Office and the Governor Office. And secondly, we conducted the expos to showcase the research conducted in the Punjab universities, so that the industrialists they can visit the expo and they can contact with the researchers. Similarly, we are conducting the training sessions for the Director Oryx and the Quality Enhancement Cell Directors, so that the universities can commercialize their research properly. Moreover, we are persuading the universities to conduct the thesis fair, so that the people from industry and the business, they can allocate the research topics to the students, and that research can be uploaded on the web portals of the Chamber of Commerce. So in this way, we want to bridge the gap between the industry and academia. We want that the universities should include the industrial professionals in their board of studies as well, so that the curriculum can be developed according to the needs of the market. Mr. Chairman, what is the role of universities' research for policy making? At the moment, very little research. Our universities took part in the formulation of Vision 2025, and we have presented concept papers and roadmaps
in that vision. For instance, for energy, Pakistan Energy Policy Strategy, I wrote a complete energy policy strategy, and that was integrated in that vision as well. And in the many academicians, they took part in it. But I think that the participation of the academia in the policy formation is very limited. It would be increased with the passage of time. At the moment, we have a shortage of PhD faculty in our universities. If you look at the PhD faculty versus student ratios, in many universities that ratio is 1:80. Whereas if you look at the Cambridge University or the Oxford or the Harvard, you will find that for every 4 students they have a 1 PhD faculty member. So this is a huge gap. At the first step, we are trying to attain 20 for every 20 students 1 PhD teachers in the engineering and the scientific fields, and for every 30 students 1 PhD faculty in the discipline of science, social sciences. So we are striving for that. Once it is achieved, then we will move forward to strengthen this ratio. Similarly, in our universities are mainly dealing with the undergrads. So the undergrads cannot create a new knowledge. For that, we need to increase the postgraduates, the postgrad programs, and the postgrad students. And to initiate the postgrad students, the HEC requirements are for that you must have an appropriate number of PhD faculty. So that is lacking in the universities. And then the quality of the PhDs that are coming from the China and the Malaysia and the other countries is also questionable. All the PhDs do not have a similar standard or the same standard. Because I have been the chairman of the selection board in the University of Chang and the member of the selection board in other universities, and now I am also participating in these meetings of the syndicates and the board of governors in various universities, and everywhere the situation is same. So every university is hungry to recruit good PhD faculty so that they can disseminate and impart the knowledge to their students. So we are lacking currently in this dimension. For that very purpose, the federal HEC, provincial HEC, the Punjab government, Punjab Education and Endowment Fund, all are trying hard and providing resources to the faculty to get their PhD degrees from the top 100 universities of the world. So we are hopeful that when they will resume their positions, this component will be strengthened, and the research output and the policy making participation will increase. What is accountability mechanism for PHEC? We are for financial accountability. The Auditor General of Pakistan, every year they conduct the audit of the PHEC. For controlling authority is the Chief Minister of the Punjab, and we are answerable for every sorry, that's it. यहीं से start कर लीजिए. So we are answerable for every that's very step. Another important function of the PHEC is the preparation of the feasibility studies for the new universities in Punjab, and similarly for the private universities that want to get the charter. So we make sure that the according to the Punjab government 2006 policy, all the parameters have been met, and then we forward the case to the HED and the Provincial Assembly for the charter as well. How much PHEC focusing to create opportunities for the PhD holders? Yes, there are schemes, but I could not get a funding yet. One of the scheme is that the scholars that have gone abroad on PEEF scholarships, when they return, we want to provide them an opportunity on interim placement for 1 year in the universities in the Punjab. And the secondly, being our representation in the syndicate, we make sure that all the recruitments are being made on merit. I think that for a good PhD, there is no limitation. More than one universities are eager to recruit such person having a specialized knowledge. I think for a good PhD, there is no shortage of jobs. Mr. Chairman, where do you see PHEC when you would complete your tenure?
I think the PhD will be a much better place after 4 years of my tenure. We are going to start our recruitment policy. We have formulated a recruitment policy that will be approved by the commission, and then we will recruit the different DGs and the directors on a competitive process basis. So similarly, we have launched a proposal to the Government of Punjab for acquiring a land for the own building of the PHEC and a training academy for the PHEC. So capacity building of the PHEC is very much imperative in this regard. Secondly, we want to increase the funding of the PhDs and the postdoctorate and the foreign trainings and the conferences for the faculty. Thirdly, we want to increase the teachers training program for the colleges and for the universities. Fourthly, we want to complete the capacity building, and then we want to. We are in the process of improving the curriculum of the associate degree program as well. And secondly, we are in the process of formulating an app that every student in the Punjab should apply through that app in every university. The purpose is to get the data that the how many students are going into which discipline and in which demographic area, in which area, which degree is the hot degree, so that on the basis of that data we can suggest the government that in which area or in which discipline the universities should new universities should be established. So the data generation, the data utilization, for better planning, for better policy making, I think the central data bank is very, very important, that we have initiated a program with the support of the BIDB as well. So when I leave after 4 years, the PHEC will be a very vibrant voice in policy making, in curriculum development, and in training imparting in the universities in the Punjab and the colleges, inshallah. Mr. Chairman, are you satisfied with the quality education? And secondly, all those programs which you feel, PHEC feel, there is no scope or no need in future, that must be stopped? No one can be satisfied completely. If you get satisfaction, then you cannot progress. So definitely we are not satisfied, and we want to achieve the heights in every program. As far as your second part of your question is concerned, that those programs that are not generating money should be stopped. We are not in that favor, because if you look at in universities, the Punjabi department cannot give you money. The philosophy department cannot provide you a good money. Kashmiri art department cannot provide you money. But these programs are very much essential for the character building, for well shaping up a society. Their role is enormous. And alive the literature. So everything is not done for the finances only, for the money generation. So it is very much imperative for the human resource development in different disciplines, for the creation of new knowledge, because now the knowledge, there are no boundaries for the disciplines. Now the interdisciplinary research is very, very important. Maybe the philosophy can be linked with the human resource development, with the psychology and the other branches of science and arts. So I think those programs cannot be stopped. And what are your 3 priorities? Number 1 is to bring a paradigm shift from the theoretical research to the applied research. Number 2 is the capacity building of higher education, and number 3 is to provide a comprehensive quality assurance system to the universities of the Punjab. Thank you so much, Mr. Chairman. Our program Hot Talk, but the answers were very soft and very prompt. Thank you so much. Viewers, I would like to say goodbye, and we would see you in the next program, Hot Talk, with the different guests. शहर बसते हैं वहाँ के वासियों से और उनके दिलों में कायम मोहब्बतों से। DHA मुल्तान में भी हमने आपके लिए मोहब्बतों, कामयाबियों
और खुशियों भरी कहानियां इकट्ठी की हैं। लाहौर से आने के बाद मैंने और सना ने डीएचए मुल्तान को ही चुना। मुल्तान में रिहाइश के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, लेकिन डीएचए मुल्तान देखने के बाद सोच लिया अगर रहना है तो डीएचए मुल्तान में ही रहना है। डीएचए मुल्तान में घर बनाने का मशवरा एक दोस्त ने दिया और रियली क्या अच्छा मशवरा था कि घर बनाने का मजा आया ना। आला लोकेशन, बेहतरीन माहौल, खूबसूरती और चारों तरफ हरियाली। यकीन माने कि दिल खुश हो जाता है। अंदरून शहर में तो गली में गाड़ी ले जाना भी मुश्किल और यहाँ डीएचए मुल्तान में वड्डी वड्डी सड़कें, हर तरह की सहूलत, बेहतरीन स्कूल्स और फिर मोहल्लेदारी।